गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अभी ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि इंडिया जो है डायरेक्टली अफगानिस्तान को जो है वो वीट तो की एड तो नहीं दे सकता। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू हम अफगानिस्तान को 50,000 टन वीट जो है वो देंगे। तो अब जो है पाकिस्तान के थ्रू बाय रोड जो है हम पंजाब इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद जो है ये वीट का ट्रांसफ़र करेंगे और अफ़गान बॉर्डर में कंधार में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो ऑफिशियल्स हैं वो हमसे वीट लेंगे। तो 5 बैचेज़ में है ये वीट को भेजा जाएगा, 10,000 टन करके 5 बार भेजा जाएगा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उनके वहाँ पे अपना खुद का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है इनसाइड अफ़गानिस्तान, और वो इसको बेटर जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो 1961 में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर जो थे, उनके कहने पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। 2002 में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको जो है वो नोट किया गया है। और इनका गोल है कि 2030 से पहले ग्लोबली जो है हम हंगर को ख़त्म करेंगे। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको जो है दो तरह में से ये फूड की जो असिस्टेंस देता है। एक तो क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली फूड दे देते हैं, या फिर जहाँ पर ये फूड नहीं दे सकते तो वहाँ पर कैश बेस्ड ट्रांसफ़र्स करते हैं ताकि लोग फूड खुद खरीद के खा सकें। तो सबसे पहली बार ये कैश बेस्ड ट्रांसफ़र जो है वो श्रीलंका में जो है सुनामी के टाइम पर जो है वो इसका जो है वो पायलट एक तरह से प्रोजेक्ट चलाया गया था 2005 में। और उसके बाद से जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कैश बेस्ड ट्रांसफ़र्स भी जो है वो अपना लिया। 2019 में इन्होंने लगभग 100 मिलियन पीपल को जो है 88 कंट्रीज़ में फूड असिस्टेंस दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ही एक रिकॉर्ड है। और इनके लिए हंगर का मीनिंग क्या होता है, ये अंडर नरिशमेंट के जो है मापदंड को यूज़ करते हुए हंगर को नापते हैं। ठीक है, तो इनका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, इटली में, और वहाँ से ही ये ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोलोमन आइलैंड्स। तो अभी आपको याद होगा जिन्होंने करंट अफेयर्स को फॉलो किया है, तो सोलोमन आइलैंड्स ने जो है रिसेंटली ताइवान के साथ अपने जो है जब रिश्ते ख़त्म करके चाइना के साथ रिश्तों को जो है ओपन किया था, मतलब जो है बढ़ाया था, तो वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। तो उसी सेंटिमेंट को देखते हुए यूएस ने अब जो है वो मौका जो है वो देखा है, और उन्होंने अपनी एम्बेसी ओपन का जो करने का जो उन्होंने फ़ैसला लिया है सोलोमन आइलैंड में। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वो साउथ पैसिफिक आइलैंड में, अभी एक तरह से अब आपकी चाइना और यूएस की रेस चल रही है इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। तो सोलोमन आइलैंड में जो है अब यूएस अपनी एम्बेसी खोलने को कह रहा है। ठीक है, तो पहले भी वो 5 साल के लिए वहाँ पर उनकी एम्बेसी चलती थी, लेकिन 1993 में उस एम्बेसी को बंद कर दिया गया। तो उसके पास में ही नेबरिंग पपुआ न्यू गिनी जो है, वहीं से यूएस डिप्लोमेट्स ऑपरेट करते थे, और वो सोलोमन आइलैंड्स को जो है वो की एम्बेसी जो है में एम्बेसी तो नहीं थी, तो वो जो है पपुआ न्यू गिनी की एम्बेसी से ही जो है वो ऑपरेट करते थे। तो एम्बेसी जो है अब उनकी कैपिटल जो है सोलोमन आइलैंड की होनियारा वहीं पर लोकेटेड होगी। और सोलोमन आइलैंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक सोवरेन कंट्री है ये। 6 मेजर आइलैंड्स हैं, 900 स्मॉलर आइलैंड्स हैं। ओशियाना जो है कॉन्टिनेंट वहाँ पर पड़ती है ये। ठीक है, जिन्हें नहीं पता, ओशियानिया कॉन्टिनेंट जो है वो एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये पैसिफिक के कुछ आइलैंड कंट्रीज़ आती हैं। तो ये ईस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी में पड़ता है और नॉर्थ वेस्ट ऑफ वानुआतू में पड़ता है। पहले ये एक ब्रिटिश टेरिटरी होती थी, अभी भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब है। वैसे अभी भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, और क्वीन एलिजाबेथ टू जो है वो जो ब्रिटेन की क्वीन है वो अभी भी इनकी हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन देखो, सोलोमन आइलैंड ये रहा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये पपुआ न्यू गिनी है। ये अब इंटरनेशनल डेट लाइन इसके बहुत दूर है यहाँ से, तो अगर आपको क्वेश्चन में आए कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ये ईस्ट में पड़ता है तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये वेस्ट में ही पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लैक्टोबैसिलस प्लैनेटरम JBC5। तो भी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के जो है कुछ साइंटिस्ट ने जो है एक ऐसा प्रोबायोटिक क्या होता है, अब आपकी जो गट में बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया, ठीक है, तो क्या होता है कि कई लोगों के एज के साथ वो बैक्टीरिया जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, उससे उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि तो ये अच्छा बैक्टीरिया आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, कंप्लीट डाइजेशन में। तो कुछ एज के साथ जो है वो बैक्टीरिया कम होना जब शुरू हो जाता है आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके जो है बैक्टीरिया जब कम होता है तो आपका डाइजेशन अच्छी से नहीं होती है। ठीक है, जब डाइजेशन अच्छी नहीं होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक एज के बाद खासकर
कि अगर आप प्रोबायोटिक ले रहे हो तो आपके जो है गट बैक्टीरिया बार बार जो है वो रिप्लेनिश होते रहेंगे और उससे आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, और डाइजेशन अच्छी होगी तो आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो बॉडी से निकल जाएंगी और आपकी हेल्दी लाइफ होगी, इवन लॉन्जिविटी आपकी लाइफ भी लंबी होगी, ठीक है। तो हेल्दी एजिंग के लिए प्रोबायोटिक्स को हमेशा डॉक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं। तो अब जो एक ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने एक प्रोबायोटिक बनाया है, प्रोबायोटिक बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्लैनेटेरम, जो एक डेयरी प्रोडक्ट से बनाया गया और कहा गया है कि इस प्रोबायोटिक से लोगों की एजिंग में जो है वो बहुत हेल्दी होगी उनकी एजिंग, ठीक है। मतलब उनकी एक तो लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल होगी एज जब वो एज उनके एक एज हो जाएगी, सीनियर हो जाएंगे जब वो, और इसको उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्ट से निकाला है, ठीक है, इस बैक्टीरिया को। तो ये इसी प्रोबायोटिक से उन्होंने एक योगर्ट भी बनाया है ताकि लोग इसी को कंज्यूम कर सकें और इससे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोबायोटिक होते हैं वो आपके जो है गट बैक्टीरिया को जो है वो रीस्टोर कर देते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए इसलिए हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198th बर्थ एनिवर्सरी पर जो है नेशन उनको ट्रिब्यूट पे कर रहा है। तो वो एक इंडियन फिलोसोफर थे, सोशल लीडर थे और फाउंडर थे आर्य समाज के, ठीक है। तो सबसे पहला जो शब्द स्वराज जो है वो इन्होंने ही दिया था और उन्होंने ही 1876 में कहा था इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है। इसी स्लोगन को और इसी स्वराज के नारे को बाद में लोकमान्य तिलक जी ने भी जो है वो अपनाया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो आइडोलेट्री और रिचुअलिस्टिक वर्शिप, आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा, उसके खिलाफ थे और रिचुअलिस्टिक वर्शिप के भी खिलाफ थे। वो कहते थे कि वैदिक आइडियोलॉजीज़ को रिवाइव करना ज़रूरी है। तो जो हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन जी, उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे मैडम भिकाजी कामा, स्वामी श्रद्धानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह, वी डी सावरकर, लाला लाजपत राय, ये सब भी जो है वो दयानंद सरस्वती जी से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो एक सन्यासी थे वो और वो उस समय पर भी इक्वल राइट्स फॉर वीमेन की बात करते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सरसाइज मिलन। तो अब ये नाम से आपको मिलान लग रहा होगा, ठीक है, किसी को हो सकता है कि मिलान लगे तो वो क्वेश्चन को गलत कर सकता है, बट ये मिलन है, ठीक है। तो इंडिया ये ऑर्गेनाइज करता है एक्सरसाइज मिलन। तो इस बार 12th प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू किया जा रहा है विशाखापट्टनम में, और ये एक्सरसाइज मिलन जो है वो कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो 1995 से 2 साल में एक बार ये सॉरी साल में 2 बार ये एक्सरसाइज की जाती है, बायएनियल है ये, ठीक है। तो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये पहले पोर्ट ब्लेयर में होती थी और अब इसको जो है विशाखापट्टनम, आई एम सॉरी, बायएनियल मतलब होता है 2 साल में एक बार, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था बीच में। सो पोर्ट ब्लेयर जो है इस वहाँ पर इसको पहले कंडक्ट किया जाता था और अब जो है इसको शिफ्ट करके विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे इस बार मिलन 2022 में 46 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे पहली बार जो है यूएस को भी इनवाइट किया गया इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब आप ये एक विडंबना देखो कि रशिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें यूएस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि वो इस टाइम पर यूक्रेन में एक दूसरे के सामने है, ठीक है। तो 46 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है, फिर इवन इंडिया अपना जो है कैपेबिलिटी दिखाएगा यहाँ पर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल की वेसल की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो सबमरीन्स अगर डिस्ट्रेस में है तो उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। तो ये बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास ये कैपेबिलिटी है, तो इंडिया के पास भी ये कैपेबिलिटी है ऑफ कोर्स, इसलिए वो ये दिखाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। तो अब इसरो जो है 2022 का सबसे पहला लॉन्च करने वाला है, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। वही सिंपल, आपको शब्द से समझ आ रहा होगा। अर्थ की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू या फिर स्पेस बेस्ड अदर फॉर्मेट्स जो है उनके थ्रू जो है अगर मॉनिटर किया जाए तो उसको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम नेचुरल और जो है बिल्ट इन्वायरमेंट्स दोनों को ऑब्जर्व करते हैं स्पेस से। अर्थ ऑब्जर्वेशन ऐसे ही की जाती है। तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो स्पाई सैटेलाइट भी हो सकती है और नॉन मिलिट्री सैटेलाइट्स भी हो सकती है, जैसे इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करना, मीटरोलॉजी की मॉनिटरिंग करना, कार्टोग्राफी करना, कार्टोग्राफी में का मतलब होता है मैप मेकिंग, ठीक है। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4 का क्या यूज़ है। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ये इंडिया ने न्यू जो है वो
नेमिंग सिस्टम अपनाया है। पहले जैसे हम कार्टोसैट सीरीज़ जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कई तरह की होती थी, जैसे उसमें एक होता था कार्टोसैट सीरीज़। तो कार्टोसैट सीरीज़ वो होती थी जो कि लैंड की जो है टोपोग्राफी की मैपिंग के लिए उनको लॉन्च किया जाता था। फिर ओशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम ओशन सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करते थे। तो हमने इन सब को कन्फ्यूजिंग नाम को जो है वो ईजी करने के लिए हमने अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 2 3 4 ऐसे करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब इन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से हम लैंड और फॉरेस्ट की मैपिंग कर रहे हैं, फिर वाटर और मिनरल्स या फिश की हम जो है वो मैपिंग करते हैं रिसोर्सेज की, वेदर या क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन करते हैं, सॉइल असेसमेंट करते हैं। ये सब हम जो है इसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अगस्त में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंडिया ने थर्ड जो है वो लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गई थी, ठीक है। अब इंडिया की टोटल कितनी सैटेलाइट्स हैं स्पेस में? तो 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं इंडिया की करंटली स्पेस में, जिसमें 21 जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन है, 21 जो है वो कम्युनिकेशन बेस्ड है, 8 जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं और 3 जो है वो साइंस सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में दी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड रेडियो डे। तो वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो हर साल फरवरी 13 को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार इसको यूनेस्को ने प्रपोज किया था 2011 में कि हमको ये सेलिब्रेट करना चाहिए, और फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी इसको एक्सेप्ट किया। और इस 2012 में से ही जो है हम वर्ल्ड रेडियो डे जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में सबसे पहली बार रेडियो जो है वो 1920 में आया था, जब एक बिल्डिंग से बॉम्बे में जो है वो एक बिल्डिंग से रेडियो को ब्रॉडकास्ट किया गया था, और 3 साल बाद सबसे पहला रेडियो प्रोग्राम जो है वो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से ही एयर किया गया। इस साल का थीम थीम जो है वो वर्ल्ड रेडियो डे का वो है रेडियो एंड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट किस में? ट्रस्ट हम रेडियो जर्नलिज्म में बढ़ाना चाहते हैं। फिर ट्रस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले रेडियो का। ट्रस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ रेडियो स्टेशंस, जो रेडियो स्टेशंस है वो कंपेटिटिव हों, प्रॉफिटेबल हों, ऐसा नहीं कि वो जो है वो लॉस मेकिंग हो, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सकें, कंपेटिटिव हों। तो ये जो है इस साल का थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। Okay, so now let us see all these topics in English. So the first topic is World Food Program. So this topic has been in news because India has recently decided that they will be providing 50,000 tons of wheat support to Afghanistan through this World Food Program. Okay, so after the Punjab elections, India will be sending truck convoys through Pakistan by road, and these trucks will be received by World Food Program officials in Kandahar, and India will be sending this 50,000 tons of wheat to Afghanistan in 5 batches. Okay, why we have selected World Food Program for it? Because we did not want to deal directly and officially with Afghanistan's Taliban government. So instead, we thought of selecting a UN-based organization which has some credibility and which has its own logistics network inside Afghanistan. So we are dealing with United Nations World Food Program. We are not dealing with directly with Taliban government because we have not recognized it. Rather, nobody has recognized it yet. So that's why we are dealing it through World Food Program. Okay, so this World Food Program is was established in 1961 at the behest of US President Eisenhower, and it is considered as the world's largest humanitarian organization. It also holds the world record for that in 2002, and it has a goal of ending hunger around the globe by the year 2030. So it provides food assistance in two ways. So first one is directly food assistance is given, but in case if there is some if there are some issues in providing food aid, then in that case cash based transfers are given to the beneficiaries so that they can avail food by themselves. So this cash based transfers were first launched in 2005 during the tsunami disaster in Sri Lanka. Okay, so in 2019, World Food Program provided assistance to about 100 million people, which are spread across 88 countries of the world. Okay, so its headquarters is located in Rome, that is in Italy. So now let us see the next topic, which is Solomon Islands. So US has said, you may be for those who have been following current affairs closely since the last few months, they may be able to recall that in November 2021, I think it was last week of November 2021, there was a news item that people were protesting and people were rioting in Solomon Islands because the government of Solomon Islands decided to switch over
the diplomatic allegiance from Taiwan to Beijing. So they disconnected their relationship with Taiwan because on the upon the behest of Beijing, that is from China. Okay, so people were protesting against this decision of their government. So seeing an opportunity in in all this fiasco of Solomon Islands government, so US has seen this as an opportunity, and they have seen that there is an anti-China mood in this country. So they have decided to open an embassy in this Solomon Islands. Okay, so of course there is a rivalry between US and China to increase their influence in Indo-Pacific and particularly in South Pacific countries. So they were already operating an embassy in Solomon Islands for 5 years, but they closed it in 1993, and now they want to reopen it. So currently, the U.S. Diplomats are operating from Papua New Guinea, which is the neighboring country of Solomon Islands. And after this decision, they are probably going to open an embassy in Honiara. Honiara is the capital of Solomon Islands. Okay, so about the Solomon Islands, it's a sovereign country. It has about 6 major islands and 900 smaller islands in Oceania. Oceania is the continent which consists of course, this Australia, New Zealand, and this South Pacific island countries. And it is located east of Papua New Guinea, and it is located at the northwest of Vanuatu. Okay, so it was a British Solomon Islands protectorate, but it gained independence in 1978. But it is still a constitutional monarchy where the British Queen exercises influence as the head of state of Solomon Islands. Okay, so this is the location. You can see Australia here. This is Papua New Guinea. So, but this Solomon Islands is not part of French Polynesia. It's an independent country, and it is located west to the international date line. So, in case you have a question about its location, you must be able to see it. Okay, because it has been in news for more than one reason this year. So, you can expect a question regarding this area or the nearby countries. So, just go ahead and see the map of this area. Okay, so now let us see the next topic, which is Lactobacillus plantarum JBC5. So this is a probiotic which has been discovered by the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, which works as an autonomous institute of the Department of Science and Technology. So probiotics are basically good bacteria which are required for your stomach or your gut health. Okay, so you know that good bacteria are present in your intestines, and they help you in good digestion. They aid in digestion. They help even if you have consumed some oily or hard food, then this probiotics will help you to digest them. Okay, so after a certain age, like after 40s, most probably 40s, when you cross 40s, your gut bacteria starts decreasing, and that's when the problem of indigestion starts in people. That's why it is recommended that after 40 years of age you should start consuming probiotics. So this good bacteria must be consumed by people so that they can cure their problem of indigestion, acidity, or constipation like things. So especially the people who are above 60 years of age, this probiotics will help them very much, and they can even advance their life. They can hope for longevity also. So this particular probiotic has also been made with that particular objective in mind. It has shown tremendous results, and people can hope for longevity and healthy aging. So this probiotic has been derived from a dairy product, and it has also been developed as a yogurt so that people can consume it directly, and it will have immense health benefits. Okay, so you know
that if you restore the gut bacteria occasionally, it helps it helps in proper digestion of food, and if you are getting proper digestion, then a lot of diseases will leave your body. Okay, so now let us see the next topic, which is Swami Dayanand Saraswati ji. So the nation is paying tributes to Swami Dayanand Saraswati ji on his 198th birth anniversary. So of course he was an Indian philosopher, social leader, and founder of Arya Samaj. So he was the first one to give the call of Swaraj. So in 1876 he gave this slogan, India for Indians, which of course was later taken care by Lokmanya Tilak. So he denounced idolatry, that is Murti Puja or idol worship, and ritualistic worship was also denounced by him. So he talked about reviving the Vedic ideologies, and the President of India, S. Radhakrishnan ji, called him as one of the makers of modern India. So Swami Dayanand Saraswati ji was also an influencer on a lot of has had influence on a lot of people like Madam Bhikaji Kama, Swami Shraddhanand ji, Shyamji Krishna Verma, Bhagat Singh, V.D. Savarkar, Lala Lajpat Rai, and all that. So he was a sannyasi, that is an ascetic, but and he of course had an unflinchable belief in the authority of Vedas. Okay, so he advocated the doctrine of karma and reincarnation, and he was also a proponent of equal rights for women. Okay, so now let us see the next topic, which is exercise Milan. So this is not Milan. Milan is in Italy, but this is Milan, and India conducts this exercise biennially, that is twice, once in 2 years. It's a multilateral naval exercise which started in 1995, and this year's Milan exercise will be conducted at Vishakhapatnam, of course. So earlier it used to be conducted at Port Blair, but now it is being shifted to Vishakhapatnam. It was shifted in Vishakhapatnam, I think, in 2020, and this Milan 2022 will see participation from about 46 countries, and this is the first time US is also participating. So just see this contradiction here. Russia and US will be participating in one same naval exercise, even though they are at loggerheads with each other at Ukraine. Okay, so India will be showcasing its deep submergence rescue vessel capabilities, which is a capability to rescue submarines which are in distress. Only a few countries in this world are capable of doing this. So, of course, India is also one of them. So now let us see the next topic, which is Earth observation satellite number 4. So ISRO is going to launch this Earth observation satellite by today, and this Earth observation means you can just deduce it from here, of course, that it means physical, chemical, biological information gathering of physical, chemical, and biological systems of our planet, so as to monitor and assess the status of changes in our natural and built environments. So this Earth observation satellites may include some spy satellites or even non-military satellites which are used for environmental monitoring, meteorology, cartography. Cartography means map making, and others, of course. So this Earth observation satellite number 4 is of course the fourth in the series of Earth observation satellites. So India was earlier having a very complex system of naming its satellites, but it has recently made it easier. So we had a lot of Earth observation satellites, like for mapping of land or observation of land. We had this Cartosat series of satellites, and for observation of oceans or seas, we had this OceanSat series of satellites. But now, to come out of this all these complex new naming systems, India has adopted this simple system of naming Earth observation satellites with number 1, 2, 3, 4. So you know that the number 3 Earth observation satellite, which was supposed to be launched last year, crashed, and it failed in August last year, of course. So this Earth observation satellites are going to map our forests and lands and even resources. Even it also
makes climate observations or soil assessments. So, how many satellites does India have in space? Of course, so India has about 53 operational satellites currently. 21 are, of course, the Earth observation ones. 21 are communication based. 8 are navigational satellites, which are, of course, powering the Navik. Also, so Navik is is our regional system. So three are science satellites. Okay, so now let us the next topic, which is World Radio Day. So you know that this World Radio Day is observed on 13th of February every year. So it was first proclaimed by the member states of UNESCO in 2011, but in 2012 the UN General Assembly also adopted it internationally. So the history of radio in India can be traced back to 1920, when the first radio broadcast was transmitted from the roof of a building, and 3 years later, the Radio Club of Bombay started its first radio program. So this year, the theme of World Radio Day is Radio and Trust. So we want to establish trust in our radio journalism. We want to increase accessibility of radio so that more and more people can access radio, and we also wish to make our radio stations viable. Okay, so they must be competitive, they must be profitable, of course, and they must be able to engage a wide audience. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.